हाँ मैसेज आ गया, स्टार्ट होगी। So, hi everyone. We are here and we are group number two. And today we will be presenting our analysis of banking information system, especially how modern banks are integrating new technology, especially AI, into their core operation. Let's start with our first point. How does integration affect current banking operation and what's the downtime risk? Bank today run on what's called a core banking system. Think of it as a central nervous system that handles every deposit, withdrawal, loan, and transfer. Whenever a bank wants to add a new feature, say a mobile update, a new AI chatbot, or an update payment gateway, that new module has to be integrated into the core system without disturbing daily operation. Here's a real world example in 2018. TSB Bank in the UK tried to migrating its core banking platform and ended up locking nearly 1.9 million customers out of their account for weeks. It became one of the most cited IT failure in banking history and cost of the bank hundreds of millions in compensation. That's the downtime risk we are talking about. So how does AI help here? Banks now use AI-driven migration testing tool that simulate thousands of transactions in a sandbox environment before the actual system goes live. AI can predict where bottleneck might occur, flag compatibility issue between old and new system, and even recommended the best low traffic time window to perform the switch, usually late at night, to minimize customer impact. Some banks also use AI-based rollback system that can automatically detect a failure within seconds and revert to the previous stable system, rather than a human noticing out. Now I would like to call my second member of the group, Muhammad Anas, to continue this presentation. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। मेरा पार्ट फ्रॉड डिटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी है बैंक के सिस्टम के हवाले से। सबसे पहले बैंक सिंपल रूल्स फॉलो करते थे, जैसे अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट की हो या कार्ड 1 घंटे में दो अलग कंट्रीज में यूज़ हो तो सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देता था और फ्लैग कर देता था। लेकिन फ्रॉड करने वाले लोगों को अब ये समझ आ चुका है कि किस तरह इसको बाईपास करना है। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। एआई हर कस्टमर की नॉर्मल एक्टिविटी को सीखता है और उसका एनालिसिस करता है। जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हैं और किसी का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका कोड यूज करता है तो उसको एआई से एनालिसिस करता है और अचानक अगर अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो एआई से फौरन डिटेक्ट कर सकता है और उसे जो ब्लॉक कर देता है। ये एग्जाम्पल और रियल टाइम एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगा मास्टर कार्ड डिसीजन इंटेलिजेंस सिस्टम की। ये एआई यूज करके ट्रांजेक्शन को सिर्फ कुछ मिली सेकंड में चेक करता है और बताता है कि फ्रॉड का रिस्क है या नहीं। इससे जेन्युइन कस्टमर्स को डिले भी नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट मेरा है साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी बैंक हैकर्स का बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। 2016 में बांग्लादेश हैकर्स ने पेमेंट सिस्टम का मिसयूज करके लगभग $81 मिलियन रोज की कर दिए थे। ये सिक्योरिटी ऐसे है। आजकल बैंक एआई सिक्योरिटी सिस्टम यूज करते हैं और ये 24 घंटे नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई अनयूजुअल लॉगिन वो एआई से फॉर्म डिटेक्ट कर लेता है और जो है उसको ब्लॉक कर देता है। और एआई साइबर सिक्योरिटी एआई पे साइबर अटैक की सिमुलेट होता है ताकि सिस्टम की सिक्योरिटी पहले की पैच हो जाए और वीक पॉइंट्स का पता चल जाए। ये मेरा पर्पज नेक्स्ट में कॉल करूँगा फहाद अली को। So great insights by Anas. Now moving on to our third point, which is regulatory compliance and scalability. So banks don't just answer to their customers, they answer to regulators. Means यानी कि बैंक खाली अपने customers को नहीं answer करते, वो जो है अपने regulators को answer करते हैं. Like one of the in Pakistan, one of the regulator of banks are State Bank of Pakistan. जितने भी बैंक है वो सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल में आते हैं। तो एसबीपी जो है बेसिकली उसने काफ़ी
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करेंगे जिस पे सारे बैंक्स जो हैं फॉलो करते हैं. So some of the standard rules are like PCI DSS for card data security and Basel III for risk management and AML anti-money laundering frameworks. So manually checking every transaction and customer profile against these rules is nearly impossible for the workers in the bank. They cannot manually just check thousands of or millions of transactions. So for this, they are introducing some of the AI-driven compliance systems that checks the security level of transaction. A mid-sized bank can process millions of transactions a day. So uh, one of the system is RegTech, which comes in AI compliance and security systems. And this system can automatically cross-check customer data against global section list, flag suspicious transactions using anomaly detection and detecting suspicious behaviors and abnormal behaviors, and generate compliance reports instantly instead of taking a team of analysts and taking weeks to compile. So these systems just instantly generate compliance reports uh, regarding the following anomaly transactions. Now, on scalability, as bank grows, especially with the rise of digital banking and apps like RAS in Pakistan, so transactions volume explode because every banks, like around 95% of banks in Pakistan use RAS transaction, which is a pay transaction, and which is also free of cost. So millions of people use this transaction in Pakistan. So system needs to scale from handling a few thousand transactions a day to potentially millions, especially during events like Eid or salary days. So during some events like Eid or salary days, the transaction rate, basically the online transaction rate, which is spikes in Pakistan. So it is difficult for the systems to overcome the load. So for this, the modern bank used cloud-based AI-optimized infrastructure models. So these models basically predict the future behaviors. Like these models can predict कि जो है अभी फर्स्ट डेट आ रही है अगले मंथ की, ठीक है. तो फिर जो है ना ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अभी जो है कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ट्रांसफर करेंगी, और फिर फर्दर जो है जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सैलरी जो है वो उसको भी आगे फर्दर ट्रांजेक्शन करेंगे अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को जो है देंगे और ट्रांजेक्शन करेंगे. तो इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो सर्वर्स यूसेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है सिस्टम्स क्रैश होने का डर होता है. तो जो एआई बेस्ड मॉडल्स हैं ये प्रिडिक्शन करते हैं इस टाइम की, और ये एडवांस में एलोकेट कर देते हैं. फर्दर सर्वर रिसोर्सेज जो है वो पहले से एलोकेट कर देते हैं ताकि जो है ये क्रैश ना हो और ये जो है सिस्टम इतना सारा जो लोड है ये अफोर्ड कर सके. So this concept is called auto scaling. So this concept also ensures the system that it doesn't crash under load, unlike older systems that bank uses, which have limited capacity. Now that's all for me. Now I would like to give this to my another member, which is Huzaifa, for the presentation. So Huzaifa is not here due to some reason. That's why we guys will end the meeting. And this is our presentation. Hope you like it. Thank you very much.